Balochistan levies into police force. So they have a problem. They have a big problem. उनको तो आदत है कि ये कारोबार के नाम पे, सो कॉल्ड ट्रेड के नाम पे हमने स्मगलिंग करनी है, हमने नार्को लानी है, हमने डीजल लाना है, हमने उसको 6 गुना 7 गुना कीमत पे बेचना है. एंड अगर तुम ये रोकोगे तो मैं फिर दहशतगर्दी कराऊंगा, उसको फरोग दूंगा और फिर ये नारे मारूंगा कि तुम्हारे हालात तुम्हारे काबू में नहीं है. बलूचिस्तान तो हाथ से निकल रहा है जी, बलूचिस्तान में ये हो गया वो हो गया. मुझसे बात करो, खोलो मेरे परमिट, मेरी भर्तियां खोलो, ये जो 1000 अरब से ज्यादा बजट मिलता है इसमें से मुझे हिस्सा दो. नो मोर, you are not the stakeholder. The money will go to the people of Balochistan. And I'll tell you, we'll talk about in detail. The third issue is the external power play. Now there the elitists and the Sardaris have a common agenda. Who are these external powers? You know better. What is their interest? Very clear interest. They know कि बलूचिस्तान की एक geographical location है. They know that Balochistan is blessed with not only a very vibrant, very progressive human resource, but also with natural resource. उसकी एक ब्लू इकोनॉमी है, उसकी एक एग्रीकल्चर है, उसके पास अल्लाह ताला ने दुनिया की हर नेमत दी है. They know the potential of Balochistan. They know that the Balochistan, if rises, the whole of the Pakistan rises, the region rises. So they have a problem. So they get physically involved through these terrorists, those Fitna Hindustan and Fitna al-Khawarij, and they find ready partners in this elitists and Sardaris, who are also afraid of the changing times. उनको तो वही सरदारी निज़ाम चाहिए, उनको वही गुलाम चाहिए, उन्हें वही मुलाजिम चाहिए, उन्हें वही अपनी ज़ाती जेलें भी चाहिए, उन्हें उसी तरह का इस्तेसाल चाहिए जो उन्होंने अपने बाप दादा के ज़माने में देखा था. The next is these contiguous support bases, especially the Afghanistan. क्योंकि जो अफगान, it's not the Afghanistan, it is the Afghan Taliban regime controlled area जो उनके ज़ेरे तसल्लुत इलाके हैं. क्योंकि their business is terrorism, and through terrorism sustenance of its economy, sustenance of their state, sustenance of their diplomacy. अगर आप उनकी डिप्लोमेसी भी देखें वो भी terrorism के अराउंड है. What is anything common between India and Afghanistan? Swipe DNA के. The only thing common amongst them is terrorism. तो उनकी डिप्लोमेसी भी उसी पे कायम है. इसलिए आप देखें कि what is common between Fitna al-Hindustan and Fitna al-Khawarij? Nothing. एक अपने आप को सेकुलर है, एक नेशनलिस्ट है, दूसरा जो है हार्ड कोर रिलीजियस अपने आप को एक्सट्रीमिस्ट है. लेकिन चूंकि अंदर अफगानिस्तान, तो दोनों बैठ के अभी कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन भी कर रहे हैं. Next, this is another issue because that plays in the mind, the propaganda. अच्छा, प्रोपेगेंडा जो है ना, इसके 3 हैं स्ट्रैंड्स. एंड द स्ट्रैंड 1 जिस पे चलाया जाता है वो है जी कि एहसास महरूमी, सेंस ऑफ डेप्रीवेशन, एहसास गैर नुमाइंदगी कि ये नुमाइंदे जो बैठे हैं ये हमारे नुमाइंदे नहीं हैं. एक थर्ड भी है, वो मिसिंग पर्सन है. वो भी प्रोपेगेंडे का बलूचिस्तान में बड़ा स्पेसिफिक टूल है. एंड उसके बाद जो सा चौथा है उसका, वो है दहशतगर्दी. वो बजाते खुद एक प्रोपेगेंडे का इशू, क्योंकि उसके अंदर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, कंटेंट को क्रिएट करके आप फेंकते हैं, डालते हैं और उस पर आप नैरेटिव बनाते हैं. ब्रीफली वी गो थ्रू ऑल दिस. एहसास महरूमी. एहसास महरूमी की कुछ मैं आपके फैक्ट्स रख देता हूँ. लेट मी टेक 2 cities, not Quetta, Gwadar. In Gwadar there are 3 universities. It's a population of 3.05 lakh, 3-3.5 लाख की आबादी का शहर. 3 यूनिवर्सिटियाँ हैं, 4 एजुकेशन कॉलेजेस हैं, 318 स्कूल हैं. वहाँ पे पाक चाइना फ्रेंडशिप हॉस्पिटल है, विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन बलूचिस्तान विद वेरी हाई स्टैंडर्ड फैसिलिटीज़. वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है, एक रूरल हेल्थ सेंटर है,
چائلڈ ڈسپینسریز 5 ہیں, 19 بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں, ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے وہاں پہ گوادر کی سی پورٹ ہے, ایکسپریس وے ہے, ایسٹ بے ایکسپریس وے ہے, وہاں پہ انڈسٹریل فری زونز ہیں, ٹیکس فری زونز ہیں, وہاں پہ پاک چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل کا میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے, دیر از اے کرکٹ اسٹیڈیم اینڈ دیر آر ادر سو مینی پروجیکٹس, اسپیسیفک پروجیکٹس ہیں. پورے پاکستان میں کوئی اور 3-3.5 لاکھ کی آبادی کا مجھے شہر بتا دیں جس میں یہ فیسلٹیز ہو. لیٹس ٹاک اباؤٹ تربت. 4.7 لاکھ لکھی ہوئی ہے, لیٹس سے 5 لاکھ آبادی. 2 یونیورسٹیز ہیں, 6 ایجوکیشن کالجز ہیں, کیڈٹ کالجز ہیں, گرلز کیڈٹ کالج بھی ہے, اسکولز ہیں 44, 9 میڈیکل فیسلٹیز ہیں, ایک ٹیچنگ ہاسپٹل ہے, 27 پرائیویٹ ہسپتال بھی ہیں. اس کے آس پاس وہاں پہ بھی ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, روڈ کنیکٹیوٹی ہے, بزنس ہے, سب کچھ ہے. ٹیل می any other city of such a population having this much facilities. یہ کون سی احساس محرومی ہے؟ گو ٹو پنجاب, گو ٹو سندھ, گو ٹو ساؤتھ پنجاب, گو ٹو انٹیریئر سندھ, گو ٹو دی رورل کے پی کے, چھوڑ دیں لاہور, کراچی, پشاور, کوئٹہ کو. ول یو فائنڈ ایکولنس ان شہروں میں اس طرح کے انٹرنیٹ ہیں, اتنی یونیورسٹیاں ہوں, کیڈٹ کالجز ہوں, باقی فیسلٹیز ہوں؟ کون سا احساس محرومی ہے؟ 1947 in whole Balochistan there were 114 schools. Today we are boasting with 365 schools. There are 12 universities, 5 medical colleges, 145 colleges, 13 cadet colleges, 321 technical institute. یہ ہے احساس محرومی کی حقیقت. 1947 بلوچستان کے جو علاقہ ہے اس میں 3 بڑے ہسپتال تھے, 6 ڈسپینسریاں تھیں. آج 13 میجر ہاسپٹلز ہیں, 18 ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں, 36 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے ہسپتال ہیں, 756 بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں, 650 ڈسپینسریز ہیں, 5 کارڈک سینٹرز ہیں, 8 ٹی بی کے سینٹرز ہیں, 24 ڈائلسس سینٹرز ہیں. 1947 میں پورے بلوچستان میں 375 کلومیٹر روڈ تھی, آج 24,443 کلومیٹر روڈ ہے, including 4,400 plus of highways. What is this احساس محرومی؟ آپ بجٹ کو دیکھ لیں, پر کیپیٹا, I'll give you a figure of the budget. The per capita budget of Balochistan is 75,000 plus. It is more than any other province. جو پنجاب کا پر کیپیٹا ہے وہ 45,000 سے کم ہے. تو کس احساس محرومی کی بنیاد پر یہ بیانیہ کھڑا کیا جائے؟ وہ اس بنیاد پہ کھڑا کیا جائے کہ ہم بلوچستان میں ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دیں گے.